Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Radha Madhava, Jaya Kunja Vihari, Jaya Gopi Jana Vallabha, Jaya Girivaradhari. Jai Radha Madhava, Jai Kunja Vihari, Jai Gopi Jana Vallabha, Girivaradhari. Jaya Radha Madhava,
Ram, Hare Rama, Rama Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna,
Hare Krishna. So, very warm welcome to all of you for today's session on the Srimad Bhagavatam. We'll start our session with the prayers. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskritya. Naram Chaiva Narottamam. Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayamudiraye Nashtaprayeshvabhadreshu Nityam Bhagavat Sevaya Bhagavati Uttama Shloke Bhaktir Bhavati Naistiki. So we discussed in our previous session. In fact, today we'll be starting the next chapter, the 7th chapter, where Lord Brahma will be speaking to Narad Muni about the different incarnations of the Lord, about how these different incarnations who have appeared in this universe. Now, the incarnations of the Lord, actually this word incarnation is not the right word, but in common English, that's what we use, incarnation. The right word is avatar. There are many English words which have no Sanskrit equivalent. So avatar means when the Lord descends, when he comes down, that is avatar. So as we have discussed many times, there are different times whenever there is requirement in this material world, the Lord descends and to perform some specific functions. So Lord Brahma now, he will talk about the incarnations which appeared in this universe, especially now Lord Brahma will not talk about the incarnations which appear only on earthly planet. No. Here we will see Lord Brahma will talk about incarnations, the avatars of the Lord from all the planetary systems. Right. So that's what we'll be now discussing. And that's why the name of this chapter is Scheduled Incarnation. So we'll start with text 1, Shloka number 1. Brahmo Vacha Yatrodhyatah Shititalodharanaya Bibhrat Kraudim Tanum Sakala Yagyamayi Manantaha Antar Maharnava Upagatamadi Daityam Tam Damshtrayadrim Iva Vajradharo Dadara. Brahmo Vacha Yatrodhyatah Shititalodharanaya Bibhrat Kraudim Tanum Sakala Yagyamayi Manantaha Antar Maharnava Upagatamadi Daityam Tam Damshtrayadrim Iva Vajradharo Dadara. Translation. Lord Brahma said, at the time when the unlimitedly powerful Lord assumed the form of a boat as a pastime, just to lift up the earthly planet, which was drowned in the great ocean of the universe called the Garbhodaka, the first demon Hiranyaksh appeared, and the Lord pierced him with his tusk. Now you see, Lord Brahma is talking about the first avatar of this millennium, or we can say the first incarnation which appeared in this millennium. And also now we are seeing the first demon of the universe. You see,
Yatrodhyataha, yatra udyataha. So Lord Brahma is saying here that yatra udyataha, shiti tal uddharanaya. Shiti tal. Shiti tal means this earthly planet. Uddharanaya, to lift the Mother Earth. Uddharanaya means to lift. Bibrat. So the Lord took the form to lift Mother Earth. Krodim tanum. And what form he took? Tanum means the form or the body. Sakala yagya mayim anantaha. He is the unlimited Lord, who is the goal of all yagya, the goal of all sacrifices. Antar maharanava upagatam adi daityam. Antar maharanava. Maharanava means Maha Aranav, the ocean. And which ocean? Maha Aranav, the ocean of the universe, which is called Garbhodak ocean. Upagatam Adi Daityam. And there was an Adi Daitya, or the first Daitya, first demon of the universe, which was Hiranyaksh. Tam damshtrayadrim iva vajra dharo dadara. And the Lord, he just like an ordinary person, the Lord pierced him with his tusk. Right. So here we are talking about the incarnation of the Lord, or the avatar of the Lord, which is the boar avatar, boar incarnation, or Varaha avatar. So this Hiranyaksh happened to be a very powerful demon. Even now we see demonic people on earth. And in the 16th chapter of the Bhagavad Gita, we all have seen Lord Krishna talks about two kinds of living entities, two kinds of human beings. The demoniac human beings and the divine human beings. So always there are two kinds of living entities, divine living entities and demonic living entities. Right? So Lord Brahma is the first Devata of the universe, and Hiranyaksh is the first demon of the universe. Right? So the earth is floating in the space, in the material sky, or not only earth, all the planets which are floating in space or material sky, that is all under certain condition. There is some condition. For example, there is a law of buoyancy in modern science. They study the law of buoyancy. So in law of buoyancy, for the ship to be floating on water, there has to be the weight of the air, the space within the floating object, and the water that it displaces must be, the water displaced must be less than the weight of, or the volume of the air which is in that ship. Something like that. The law is something like that. So if ship is floating in water, it is floating under certain condition. If that condition is not fulfilled, the ship will drown, sink in the water, isn't it? That's how many ships they sink. Similarly, Earth is floating in air, and all these planets are floating in air. They are all floating. Or, for example, you can also see an aircraft or a spaceship or rockets. They are all floating in space under certain condition. The moment that condition is not fulfilled, and aircrafts fall down on Earth, isn't it?
That's how there are so many crashes. So Earth also is floating in space. There is certain condition. And if this condition is disturbed, then the planet or Earth or any other planet, if that condition is disturbed, may fall down in the universal ocean, which is called Garbhodaka ocean. This universe is half filled with water, which is called Garbhodaka ocean. Now that water is not H2O, what you see on Earth. It's different. It's Garbhodaka ocean, that is called. And so the bottom half of the universe is filled with Garbhodaka ocean, and the upper half is filled with space, and which includes all these different planetary systems what we see in space. So all these planets are floating in space because of some inner constitution. As we see on our earthly planet also, if you dig the earth, there are so many minerals, gold, petroleum, all these all these minerals and mines. These are all meant to float. They're meant to keep the earth floating, not so that we dig the earth and extract those minerals. No, it is meant to keep the earth floating, right? So nowadays, these modern people, they are digging the earth and taking out all the minerals and all the constituents of earth. It's very dangerous. It's very dangerous. It's very harmful, and it is detrimental in floating condition of earth. Sometimes we human beings do things, but we don't realize what is the after effect of that. So all these disturbances that we are causing in our natural, in the natural condition of earth, it may be very harmful in future. People don't realize. So similar disturbance was created on earth at that time by the demon Hiranyaksh. He was a very powerful demon, and his name Hiranyaksh. Hiranyaksh means, Hiranya means gold, and he exploited gold from earth. He extracted so much gold from earth that whole earth fell down in the Garbhodaka ocean. You see, so if we keep disturbing the minerals and constituents of earth by our just to gratify our senses, then it's very harmful for Mother Earth. And same thing happened. Same thing was done by Hiranyaksh. She extracted all the gold from earth, and then earth fell down in the Garbhodaka ocean. So as we know, Krishna is the maintainer, Lord Vishnu is the maintainer of the universe. And whenever such situation occurs, the Lord descends down. At that time, Mother Earth was put under such condition, and then the Lord incarnate, then the Lord descended to save Mother Earth from this wrath of demon Hiranyaksh. So the incarnation of the Lord or avatara of the Lord is not an imagination, as many people think. That's why sometimes they call our Vedic scriptures and history as mythology. But it is not mythology. It is history. It's history of our universe. So it's not that the demons or they are more powerful. No. How much ever a demon may be powerful, but Lord is always there to subdue them. So avatara of the Lord is not a fantasy as imagined by many people. No. The Lord descends for a purpose whenever there is discrepancy in the order of the universe. Some people ask this question, that this earth is also bad situation is there.
Kali Yuga is going on. So why is the Lord not descending? You see, Lord is not only interested on earth. Not that only earthly planet is the interest of the Lord. No, the Lord is interested in every planet. And the Lord, he takes avatar in all the planets. But when discrepancy cannot be handled by human beings. Now this Hiranyaksh, he extracted all the gold and earth fell into the ocean, Garbhodak ocean. So then Lord has to come. So the Lord incarnated, the Lord descended on earth in this universe, not on earth. This pastime didn't happen. So Lord did not descend on earth. And it's not that Lord descends only on earth. No. Lord appears in all the planetary systems. So, avatar of the Lord, when he descends, he performs activities which ordinary human being cannot even imagine. Can you imagine lifting the earth from Garbhodak ocean? Just imagine. So that kind of activity was performed by Krishna in his avatar as Varahadev, avatar of boar. So incarnation or avatar of the Lord means, bona fide avatar means they will always descend and they will perform superhuman acts, not ordinary. They will perform superhuman acts which ordinary human being cannot even imagine of doing. Now text 2, shloka number 2. Jato ruchera janayatsu yamansu yagya akuti sunuramaran atha dakshinayam lokatrayasya mahati maharadyadartim swayam bhuvena manuna hariritya noktaha jato ruchera janayatsu yamansu yagya akuti sunuramaran atha dakshinayam lokatrayasya mahati maharadyadartim swayam bhuvena manuna hariritya noktaha. Translation. The Prajapati first begot Suyagya in the womb of his wife Akuti, and then Suyagya begot demigods headed by Suyama in the womb of his wife Dakshina. Suyagya, as the Indradev, diminished very great miseries in 3 planetary systems, upper, lower, and intermediate. And because he so diminished the miseries of the universe, he was later called Hari by the great father of mankind, namely Swayambhuva Manu. So here we see in this shloka, Jato Rucher Ajanayat Suyaman Suyagya. So Prajapati means progenitors of mankind. So Jato Rucher, so there is one Prajapati or the son of Lord Brahma, Ruchi, sage Ruchi, a great saintly person, Ruchi. So Akuti Sunur, so he begot a son in the womb of his wife Akuti, and then Dakshinayam, and then his son also, the son of sage Ruchi, he also begot a son in the wife of his wife Dakshina. Right? So Suyagya, this incarnation of the Lord, or this avatar of the Lord, is been spoken here about him, who is also known as Indradeva. So he is the son of a great sage Ruchi, and who is one of the Prajapati, is one of the son of Lord Brahma, and his son Suyagya is also called as Indradev. Now, not this Indradev. So here another avatar of the Lord is mentioned, Suyagya, or Indradev. Now this Indradev is not the current Indradev which is there in heavenly planets. No.
After every 36 lakh years, the post of Indra changes. So here we are talking about the first Indradev, the first Indra. And this first Indra was the avatar of the Lord himself. The Lord descended himself to become Indradev. And later on, other living entities also were given opportunities to become Indradev. But the first Indradev was the Lord himself, his avatar. Right? So here you see the incarnation of the Lord, or the avatar of the Lord. Jato rucher ajanayat suyaman suyagya. So lokatrayasya mahati maharad yadartim. Lokatrayasya means this whole universe. Mahatim aharad. Mahatim aharad. Mahatim means this huge universe. Arti means the distress of the universe was diminished by the Lord as Suyagya. And Swayam Bhuven Manuna Harir Ityanu Anuptaha. And Swayam Bhuva Manu, who he used to call this Suyagya, who is also known as Indradev, as Hari. That's how the name Hari came. So Swayam Bhuva Manu used to call him as Hari. So you see, this is how you know the avatar of the Lord. Not that nowadays in Kali Yuga, any person who does not even have ordinary good qualities, just because some people follow him, sometimes people start calling them as incarnations or avatara. This is not how you know avatars of the Lord. When the Lord descends, they are not ordinary. Their leelas or their pastimes are not ordinary. And how do you know that a person is an avatar? Simply by concoction, you cannot make anyone as an avatar. Nowadays, what happens? No. An avatar has to be mentioned in the Vedic scriptures, like you see here. How do we know that Suyagya or Indradev is the avatar of the Lord? Because it's mentioned here by Lord Brahma himself. Lord Brahma is saying that, isn't it? So, and not only that, the father's name, mother's name, everything is mentioned here. Where he'll be born, all these things. So till avatar means all his details will be mentioned in the scriptures, in the Shastras. Like the Kalki avatar, the avatar of the Lord, who will appear at the end of Kali Yuga. Still, when he will descend? After 4 lakh years from now. But even today, all the details about him is mentioned in the Vedic scriptures. His father's name, the name of his village, his mother's name, everything is mentioned. Chaitanya Mahaprabhu, his every detail is mentioned in the Vedic scriptures. That's why we know he is an avatar. Not that we can concoct an avatar. No. So, we don't accept any avatar without the reference in the Vedic scriptures. If a person if he claims that he is an avatar, his details must be mentioned in the Vedic scriptures along with his father's name, mother's name, village name, everything. Only then we accept a person as avatar. Otherwise, he is not God. Who is? You can all concoct a name for him. Like he has concocted that I am God, we also concoct a name for him. He is not God, he is a something. Okay. So you cannot concoct an avatar of the Lord. They are all authorized there. The description is given in the scriptures, in the Shastras. That's how we know an avatar of the Lord.
Now text 3, shloka number 3. Jagye chakardam grihe dvij devahootyam स्त्रीभिः समं नवभिरात्मगतिं स्वमात्रे ऊचे ययात्मशमलं गुणसङ्गपङ्कम् अस्मिन् विधूय कपिलस्य गतिं प्रपेदे जज्ञे च कर्दमगृहे द्विजदेहभूत्यां स्त्रीभिः समं नवभिरात्मगतिं स्वमात्रे ऊचे ययात्मशमलं गुणसङ्गपङ्कम् अस्मिन् विधूय कपिलस्य गतिं प्रपेदे. Translation, Anuvad. The Lord then appeared as the Kapila incarnation, being the son of the Prajapati Brahmana Kardam and his wife Devahuti, along with 9 other women, sisters. He spoke to his mother about self-realization, by which in that very lifetime she became fully cleansed of the mud of the material modes and thereby achieved liberation, the path of Kapil. You see, now what is Lord Brahma saying here to Narad Muni? Jagye cha kardama grihe. The Lord appeared as Kardama grihe, in the house of Kardam Muni or Kardam Rishi. Right? And Dvijadeva Hutyam. Dvijadeva Hutyam. He was appeared in the house of a Kapil, Lord Kapil. He descended in the house of Sage Kardam. And Sage Kardam was, he was again the son of Prajapati, not ordinary person. Krishna never appears in the house of an ordinary person. He appears in the house of great devotees. So, similarly, Stribhi samam navabhiratma gatim swamatre. So Kapil Muni, what Lord Brahma is mentioning about him. Now the details about Kapil Muni we will see in the 3rd canto of Srimad Bhagavatam, where all the details are given about him, Kardam Muni, Devahuti, Mother Devahuti. So Kapil Muni or Lord Kapil was born as the son of Mother Devahuti and Sage Kardam Rishi. So Uche Yayatma Shamalam Guna Sangha Pankam. Guna Sangha Pankam. So the knowledge which he has given, so he narrated Sankhya philosophy to his mother Devahuti in order to deliver her, right? So gaining this knowledge from Mother Devahuti, he got delivered. Gaining the knowledge from Kapil Muni, Mother Devahuti got delivered. She got liberation. And she attained the Kapilasya Gatim. You see here. There are 2 words important in this shloka. The first word is Atma Gatim and the second word is Kapilasya Gatim. Can you see these 2 words? Atma Gatim and Kapilasya Gatim. So Atma Gatim means the destination of the spirit soul, Atma. Many a times, whenever we see the Lord speaking, if a person follows the path spoken by Krishna, he will attain liberation. That is the meaning of moksha, that is the meaning of liberation. To follow the path given by Krishna. Now, when Arjun heard the Bhagavad Gita, he attained liberation. When Mother Devahuti heard what Kapil Muni speaks in the 3rd canto of Bhagavatam,
she got liberation. Now, liberation means, Atmagati means liberation. But here the Atmagatim which is mentioned is not what normally people see about Atmagatim, especially the Mayavadi philosophers. You know, they say that Atmagatim means to become one with the Lord. No. You see, what is the meaning of Atmagatim? Kapilasya Gatim. The word which is mentioned here is Kapilasya Gatim. Right? So Atmagatim means Kapilasya Gatim. So Kapilasya Gatim means what? To attain the lotus feet of So Atmagatim is the same as Kapilasya Gatim. Normally, what people think is Atmagatim means to become one with the Lord, but no. The real Atmagati means to go to the spiritual world and associate with the Supreme Personality of Godhead. That's why Atmagatim and Kapilasya Gatim. So Kapilasya Gatim is used here for Mother Devahuti. So after attaining liberation from this material world, where did she go? Because she attained this knowledge by Kapil Muni. She attained liberation and went to the planet where Kapil Muni lives in the Vaikuntha Loka. So Kapila Loka or Vaikuntha Loka she attained, where Lord Kapil is the predominator in that planetary system, in that planet in Vaikuntha Loka, and Mother Devahuti attained that planet in Vaikuntha Loka. So every avatar of the Lord has his abode in Vaikuntha planet. Lord Ram has his abode. Every avatar, Lord Narasimhadev has his abode in the Vaikuntha planet. So every avatar of the Lord has his abode in the Vaikuntha planet, and whichever form of the Lord you worship,
You go and serve the Lord in that capacity, in that Vaikuntha planet. So, when Krishna descends in this material world personally, when the Lord himself descends, or when his plenary expansion descends, like Lord Narayan descends, Lord Vishnu descends, or when Krishna descends. So they are divided into different kinds of avatars, different kinds of uh, incarnations. Kala avatar, Guna avatar, Manvantara avatar, Archa avatar. So they are called, when the Lord descends, they are categorized into different categories, Purusha avatars. But sometimes the associates of the Lord also descend in this material world, right? Sometimes the associates of Krishna also descend. They are called Shaktyavesh avatar. Shaktyavesh means empowered incarnation of the Lord. Sometimes Krishna sends his representatives to this material world. These representatives are called as Shaktyavesh avatar because they also behave extraordinarily. They also are superhuman. All are great acharyas, pure devotees of the Lord. They are all not ordinary people. So those associates of the Lord, when they descend in this material world, they are called Shaktyavesh avatar or empowered incarnation. So there is nothing called impersonal. Krishna is a person and we all are person. We are all personalities, like Krishna is a personality, the Lord is personality, and we associate with him as a person, in person, right? So impersonality of the Lord, generally what you see in Vedic scripture, like sometimes the Lord is called Nirguna or Nirakar and all such things. That is to negate his materiality, right? That is to negate the material conception. When Lord is called as Nirguna, that does not mean that he has no gunas or he has no qualities. Guna means quality. It is to say that Lord does not have material qualities. That is why he's called Parabrahma. When he's called Nirakar, Nirakar does not mean that Lord has no form. No. Nirakar means that he does not have a material form. So that we must understand. This is very important to understand, that whenever the word ni is used in Sanskrit, that does not necessarily mean that it is complete negation. No. That is negation of materiality of the Lord. But that is not a negation of his supreme personality. No. It's just a negation of materiality. That Lord does not have material form. Lord is not under material modes. Right? So ultimately, we have to associate with Krishna as a person, because he's a person, we are personalities, right? And service to Krishna is the ultimate objective of every devotee. Service, devotional service, because that's what we are meant to do. We are part and parcel of Krishna. We are meant to serve him eternally, right? So with progressive devotional service, as we progress in devotional service, we attain all this knowledge about Krishna. This knowledge is revealed to a devotee to the degree he advances in devotional service. So with devotional service, bhakti pareshanu bhava viraktir anyatra syat. Bhakti yoga prayojate janayati ashu vasudeve bhagavati bhakti yoga prayojitah janayati ashu vairagyam jnanam chayada hetukam. So with progressive devotional service, not only we get knowledge about Krishna, but we also simultaneously develop detachment from matter. Because still we become detached with matter, we cannot be attached to Krishna. The goal is to be attached to Krishna. Our goal, our
philosophy of Bhagavatam is not about detachment. The philosophy of Bhagavatam is about attachment, right? We want to be attached to Krishna. We want to love Krishna. And with to have pure love for Krishna, we require detachment from material world. So we don't want to become detached. Our goal is to develop attachment to Krishna. And by attachment to Krishna, automatically we will become detached from material world. Right? And this all happens by devotional service, by progressive devotional service. So as we keep engaging in seva, as we keep engaging in devotional service, slowly Krishna gives us knowledge within the heart about his position, and Jnanam and Vairagyam, and simultaneously, both happen simultaneously. We develop knowledge also, and simultaneously we develop attachment also. But devotional service cannot be whimsical, right? Normally, people think devotional service means whatever I want, I can serve Krishna like that. No. Service means it is to be given. You cannot demand service. Can you demand service? No. Service cannot be demanded. It is to be commanded by a superior authority. We are given service. You cannot demand service. Suppose if Krishna says, or suppose you want to serve someone, your master, and master says, I like water, and you give him milk. It's concoction. You think, no, water is a cheap thing, whether I give him milk. That is not service. Service means whatever he says you do. So similarly, devotional service, whenever we talk of devotional service, seva, it must be given by Guru. Right? We cannot whimsically decide what is my seva to Krishna. That is not the way we learn bhakti. That is not the process of bhakti. That is not the process of Bhagavatam. Now you see, Lord Brahma is narrating this to Narad Muni. So Narad Muni is not whimsically deciding what I want to do for Krishna. No. Vyasdev himself whimsically did not decide to write Bhagavatam. No. Even to write Bhagavatam, Vyasdev was instructed by Narad Muni, then he wrote. You see? So devotional service to Krishna means it must be given by spiritual master to the disciple. That is how through parampara we receive seva to Krishna. Through parampara we receive the knowledge of Krishna. And similarly, service also we receive through parampara system. So my guru gave me devotional service. I am serving my guru. My guru was serving his guru. And similarly, everyone serves his guru. I serve my father served his father. So everyone is serving their spiritual master, and that is how we receive devotional service to Krishna. You cannot do whimsical service. Service always has to be done under guidance of a bona fide spiritual master. So this is what we see here in this chapter. Very, very, very important, very beautiful chapter. A lot of information about different avatars of the Lord. So we'll continue our discussion. We'll stop here today. You can like the video, comment on the video. We'll stop here. Thank you very much. Hare Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna,
Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Jaya हरे कृष्णा। आप सबका बहुत स्वागत। आज के भागवत के सत्र में प्रार्थना के साथ अपने सत्र को प्रारंभ करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवति उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। तो अब हम आज नए अध्याय को प्रारंभ करेंगे भागवत पुराण के, जो 7वां अध्याय है दूसरे स्कंद का। बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है। इसमें ब्रह्मा जी भगवान के अलग अलग अवतारों का वर्णन करेंगे। जैसा हम सब जानते हैं, भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि भगवान अलग अलग युगों में अलग अलग समय पे अवतार लेते हैं, और भगवान के जितने भी अवतार हैं उनका एक विशिष्ट आ, उनकी लीलाएं होती, एक विशेष प्रयोजन होता है जिसके लिए भगवान इस पृथ्वी पे और इस सृष्टि में अवतरित होते हैं। उनका अवतरण होता है। तो ब्रह्मा जी यहाँ पे इस कल्प में जितने भी अवतार हैं, इस ब्रह्मांड में जितने भी अवतार हैं, सारे अवतारों का वर्णन तो कोई नहीं कर सकता, लेकिन कुछ अवतारों का वर्णन यहाँ पे ब्रह्मा जी करेंगे। तो आज हम शुरू करेंगे अपनी चर्चा को पहले श्लोक से, 7वें अध्याय के दूसरे स्कंद के भागवत पुराण। पहला श्लोक। ब्रह्मोवाच यत्रोद्यतः क्षितितलोद्धरणाय बिभ्रत् क्रोडीं तनुं सकलयज्ञमयीमनन्तः अन्तर्महार्णव उपागतमादिदैत्यम्
तं दंष्ट्रयाद्रिम् इव वज्रधरो ददार। ब्रह्मोवाच यत्रोद्यतः क्षितितलोद्धरणाय बिभ्रत् क्रोडीं तनुं सकलयज्ञमयीमनन्तः। अन्तर्महार्णव उपागतमादिदैत्यम् तं दंष्ट्रयाद्रिमिव वज्रधरो यददार। Translation, अनुवाद. Lord Brahma said, at the time when the unlimitedly powerful Lord assumed the form of a boar as a pastime just to lift up the earthly planet which was drowned in the great ocean of the universe called the Garbhodaka, the first demon Hiranyaksha appeared and the Lord pierced him with his tusk. अब हम इसका अनुवाद देख लेंगे हिंदी में. ब्रह्मा जी कह रहे नारद मुनि से कि महाशक्तिशाली भगवान उन्होंने एक शूकर का रूप लिया अपनी लीला करने के लिए इस पृथ्वी ग्रह को गर्भोदक समुद्र से उठाने के लिए. क्योंकि इसे हिरण्याक्ष नाम का राक्षस उसने गर्भोदक समुद्र में डुबा दिया था और भगवान ने अवतार लिया और उसे अपने दांतों से मारा. तो अब आप देखिए ब्रह्मा जी क्या कह रहे हैं कि यत्रोद्यतः क्षिति तलोद्धरणाय बिभ्रत्. क्षितितल, क्षितितल का मतलब होता है पृथ्वी, जो हमारी पृथ्वी है. यत्र उद्यता, उसे उठाया, और भगवान ने बिभ्रत एक रूप लिया. क्रोडीम तनुम, तनुम मतलब शरीर. किसका लिया? सकल यज्ञमयी मनंता, वो परम पुरुषोत्तम भगवान, उन्होंने रूप लिया किसका? एक सुअर का. अंतर महारणव उपागतम आदि दैत्याम, जब महारणव, महान अर्णव मतलब महान सागर में, उपागतम आदि दैत्याम, उस महान सागर से निकाला पृथ्वी को, आदि दैत्यम पहले दानव से, पहले दानव के प्रकोप से. तम दंष्ट्रयाद्रि में वज्र धरो ददार, और इस तरह से उसको उसका वध किया. तो अब आप देखिए ब्रह्मा जी कह रहे हैं, तो ब्रह्मा जी इस ब्रह्मांड के पहले देवता हैं और हिरण्याक्ष जो है वो इस ब्रह्मांड का पहला दैत्य है या पहला दानव है. तो हिरण्याक्ष जो है उसने इस पृथ्वी को गर्भोदक समुद्र में डुबा दिया था. तो हमेशा दो तरह के जीव होते हैं, दैत्य और देवता, दानव और देवता. तो ये जो पृथ्वी है, ये जो आकाश में घूम रही है या तैर रही है, जैसा हम सब देखते हैं कि जो नाव होता है, एक एक सिद्धांत है वैज्ञानिकों ने निकाला है, उसे कहते हैं बोयंसी का सिद्धांत. मतलब उसमें क्या होता है कि कुछ इस तरह है वो कि जैसे नाव है, अगर वो पानी में तैर रहा है तो एक विशेष, एक ऐसा आयोजन हुआ है जिसके कारण वो तैर रहा है. ऐसा नहीं है कि नाव हमेशा ही तैरता रहेगा, नहीं. एक समय है, उस समय कुछ नियम है जिसको वो पालन कर रहा है, जिस कारण नाव तैर रहा है. तो उसमें उन्होंने निकाला है, बोयंसी का जो लॉ है उसमें, सिद्धांत है उसमें, कि नाव जितना पानी का भार, नाव जैसे डूबा पानी में, तो जितना पानी उसने घेरा उसका जो भार है
वो नाव में जितनी हवा है, मतलब नाव के भार से कम होना चाहिए, तभी नाव तैर सकता है पानी पे। तो इस तरह ऐसा ही कुछ सिद्धांत है वो। तो कहने का मतलब, मैं क्यों ये कह रहा हूँ, इस सिद्धांत के बारे में बता रहा हूँ, क्योंकि जैसे आ, हवाई जहाज भी हवा में उड़ता है, तो कुछ सिद्धांत है, कुछ ऐसा हो रहा है, कुछ ऐसे नियमों का वो पालन कर रहा है जिसके कारण वो हवा में तैर रहा है। और इसीलिए जब उन नियमों का उल्लंघन होता है, जब उन नियमों का पालन नहीं किया जाता है, तो हवाई जहाज गिर भी जाता है पृथ्वी पे, है कि नहीं? कई बार हम देखते हैं क्रैश हो जाता है या कहीं गिर गया, है ना। नाव को भी हम देखते हैं कई बार वो डूब जाती है। क्यों डूब जाती है? क्योंकि जो नियम है उसका पालन नहीं हुआ, या किसी कारण उसका उसका वो नियम पालन नहीं कर पाए, तो वहां पे डूब जाती। उसी प्रकार पृथ्वी भी, या जितने भी ग्रह, सिर्फ पृथ्वी ही नहीं, जितने भी इस ब्रह्मांड में ग्रह हैं, इन सबको देख रहे हैं आकाश में तैर रहे हैं। तो ये ब्रह्मांड जो है, ये आधा भरा हुआ है गर्भोदक समुद्र से, और बाकी जो ऊपर का आधा भाग है वो, उसे हम आकाश कहते हैं। तो जितने भी ग्रह और तारे नक्षत्र हम देखते हैं, ये सब उस आधे जो खाली जगह या आकाश है उसमें है। तो ब्रह्मांड में जो गर्भोदक समुद्र है, वो आधा ब्रह्मांड का हिस्सा लेता है। तो जितने भी ग्रह हैं ये हवा में जो उड़ रहे हैं, ये एक विशेष अवस्था में है, इस वजह से हवा में उड़ रहे हैं। अगर इस अवस्थाओं में कुछ हमने परिवर्तन किया, इन सिद्धांतों में कुछ परिवर्तन किया, सिद्धांत को तो कोई नहीं बदल सकता, लेकिन अगर उस अवस्था को हमने थोड़ा भी इस सिचुएशन को या इस कंडीशन को अगर छेड़खानी की किसी ने, तो ये जो ग्रह हैं ये वापस से गर्भोदक समुद्र में भी गिर सकते हैं, है ना। जैसे आजकल हम देखते हैं जो लोग हैं, वो अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए, जैसे हमारी पृथ्वी है, अब पृथ्वी का जो, ये जिस चीज का बना हुआ है, वो हम देखते हैं इसमें बहुत सारे खदान हैं और ये सारी चीजें। तो ये सब पृथ्वी का एक एक सामंजस्य बना हुआ है जिसके कारण पृथ्वी हवा में उड़ रही है। अगर हम इसके इसके छेड़खानी करेंगे, इससे छेड़छाड़ करेंगे, तो सामंजस्य बिगड़ जाएगा। और ये अभी हम लोग कर रहे हैं, तेल निकाल रहे हैं, सोना निकाल रहे हैं, हीरा निकाल रहे हैं, कोयला निकाल रहे हैं। ये सब एक सामंजस्य बनाया गया है ताकि पृथ्वी हवा में उड़ती रहे। लेकिन हम इसके साथ खिलवाड़ करेंगे तो हम बहुत ही भयानक अवस्था को जन्म देंगे, है ना। इसीलिए, और ऐसा ही कुछ हिरण्याक्ष ने किया था, जो हम पढ़ते हैं हिरण्याक्ष के बारे में, अभी हम आगे देखेंगे। तो हिरण्याक्ष जो था, इसने भी, हिरण्याक्ष का मतलब होता है हिरण्य, हिरण्य का मतलब होता है सोना। तो इसने पृथ्वी से सोना निकाल लिया था। तो जब पृथ्वी से सारा सोना निकाल लिया तो पृथ्वी गिर गई गर्भोदक समुद्र में, ठीक है, क्योंकि उसने सामंजस्य से छेड़खानी कर दी, तो पृथ्वी गिर गई गर्भोदक समुद्र में। तब भगवान ने अवतार लिया पृथ्वी को वापस गर्भोदक समुद्र से निकालने के लिए। तो भगवान का अवतार कोई मजाक नहीं है, ये कोई मजाक की बातें नहीं है, या कोई किसी के दिमाग की उपज नहीं है। भगवान जो अवतार लेते हैं उसका एक कारण होता है, एक विशेष उसका प्रयोजन होता है। एक विशेष प्रयोजन के लिए भगवान अवतार लेते हैं।
तो इसीलिए, और भगवान का अवतार जब भी आते हैं तो वो ऐसे कर्म करते हैं जो साधारण मनुष्य सपने में भी नहीं सोच सकते। गर्भोदक समुद्र से पृथ्वी को निकालना कोई सोच सकता है क्या? हमारे समझ से भी बाहर की चीजें हैं जो भगवान करके जाते हैं, इसीलिए वो अवतार हैं। तो भगवान ने जो ये अवतार लिया, इसमें हम सबको दिखाया। और जो भी अवतार भगवान के हैं, उन सारे अवतारों का एक विशेष सिद्धांत होता है, एक विशेष प्रयोजन होता है आने का। कई लोग हमारे शास्त्रों को माइथोलॉजी कहते हैं कि ये कोई कल्पना, ऐसी बातें करते हैं। कल्पना नहीं है, ये इतिहास है। और ये पूरा विज्ञान के आधार पे ये इतिहास बना हुआ है। तो ये भगवान का अवतार, जो वराह का अवतार है, वो हम देख रहे हैं कि उसमें कैसे भगवान ने पृथ्वी को जो बुरी, अ, बहुत ही भयंकर, भयानक, भयावह अवस्था में पहुंचा दिया था हिरण्याक्ष ने, उससे बताया। और हिरण्याक्ष को उसका वध किया, जो इस ब्रह्मांड का पहला दानव था, पहला राक्षस था। दूसरा श्लोक। जातो रुचेरजनयत्सु यमांसु यज्ञ आकूति सूनुरमरान् अथ दक्षिणायाम् स्वायंभुवेन मनुना हरिरित्यनूक्तः लोकत्रयस्य महतीं महरद्यदार्तिम् स्वायंभुवेन मनुना हरिरित्यनूक्तः जातो रुचेरजनयत्सु यमांसु यज्ञ आकूति सूनुरमरानथ दक्षिणायाम् लोकत्रयस्य महती महरद्यदार्तिम् स्वायंभुवेन मनुना हरिरित्यनुक्तः। ट्रांसलेशन, अनुवाद। द प्रजापति फर्स्ट begot Suyagya in the womb of his wife Akuti, and then Suyagya begot the demigods headed by Suyama in the womb of his wife Dakshina. So Yagya, as the Indra Deva, diminished very great miseries in the three planetary systems, upper, lower, and intermediate. And because he so diminished the miseries of the universe, he was later called Hari by the great father of mankind, namely Swayambhuva Manu. तो अब हम इसका अनुवाद देख लेते हैं हिंदी में। तो प्रजापति रुचि, उन्होंने सुयज्ञ को जन्म दिया अपनी पत्नी आकुति के गर्भ में। और फिर सुयज्ञ ने स्वयं और भी कई सारे देवी देवताओं को जन्म दिया अपनी पत्नी दक्षिणा के गर्भ में। सुयज्ञ को इंद्रदेव भी कहते हैं। उन्होंने बहुत सारे इस ब्रह्मांड में बहुत सारी दुखों को कम किया। और क्योंकि उन्होंने ब्रह्मांड के दुखों को अ, कम किया, इसलिए उन्हें स्वयंभुव मणि ने हरि का नाम दिया। तो अब आप देखिए, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जातो रुचेर अजनयत सुयमान सुयज्ञ। रुचेर अजनयत, तो रुचि, प्रजापति रुचि। तो प्रजापति रुचि जो है, उनकी बारे में यहाँ पे बात हो रही है। तो रुचि कौन है? वो एक प्रजापति। प्रजापति का मतलब जिनके कारण, जिनका ब्रह्मा जी ने उनको जन्म दिया ताकि वो सृष्टि के की जनसंख्या को बढ़ाएं। जो जीव हैं उन्हें आध्यात्मिक जगत से भौतिक जगत में आने के माध्यम बने, वो उन्हें प्रजापति कहते हैं। तो जातो रुचेर अजनयत सुयमान सुयज्ञ। तो सुयज्ञ जो भगवान के अवतार थे, जिन्हें बाद में इंद्रदेव भी कहा गया। तो ये इंद्रदेव जो यहाँ बात हो रहा है, ये वो वाले इंद्रदेव नहीं है जो अभी हम सुनते हैं ना, जिनके बारे में स्वर्ग लोक में रहते हैं। ये वो इंद्रदेव नहीं है। जो पहले इंद्रदेव हैं उनकी बात हो रही है यहाँ पे। पहले इंद्रदेव जो थे वो सुयज्ञ थे, और वो भगवान के अवतार थे।
क्योंकि हर 36 लाख साल के बाद कोई नया इंद्र आता है, कोई नया मनुष्य या कोई नया नया जीव है जो इंद्र का, जिन्हें पद मिल जाता है हर 36 लाख साल के बाद। 36 लाख साल उनकी आयु होती है किसी भी देवता की, विशेषता जो स्वर्ग लोक में रहते हैं। और इंद्र देव की भी आयु 36 लाख की होती है। तो 36 लाख साल के बाद कोई और इंद्र आ जाता है। तो पहले जो इंद्र थे उनके बारे में यहाँ पे बता रहे हैं सुयज्ञ। और उन्होंने लोकत्रयस्य महतीम, आप देखिए अपने स्क्रीन पे श्लोक जो है, लोकत्रयस्य महतीम, तो ये जो 3 लोक हैं, जो बहुत ही विशाल ब्रह्मांड है, अहरद यदार्तिम, आर्त का मतलब होता है दुख, परेशानी। तो सुयज्ञ जो देवता थे, जो भगवान के अवतार थे, उन्होंने पृथ्वी को और इस पूरे ब्रह्मांड को, इसलिए त्रिलोक शब्द का, लोकत्रयस्य, 3 लोक मतलब पूरा ब्रह्मांड, तो पूरे ब्रह्मांड को बुराइयों से और दुखों से उससे मुक्त किया। और इसीलिए स्वयं भुवेन मनुना हरिर इति अनूक्तः, तो स्वयं भुव मनु जो है, उन्होंने उन्हें हरि का नाम दिया, उनका नाम हरि रखा। तो अब आप देखिए, कोई भी अवतार भगवान का, उसके बारे में आपको शास्त्रों में वर्णन मिलेगा। बिना, अगर कोई शास्त्रों में वर्णन नहीं है, आजकल जैसे चल रहा है किसी को भी अवतार बोल देना, किसी मनुष्य को, साधारण मनुष्य को जिसमें कुछ भी नहीं है, उनको हम अब कई बार लोग कलयुग में अवतार बोल देते हैं। ऐसा नहीं है, किसी को भी अवतार नहीं बोला जा सकता। यहाँ पे हम देख रहे हैं अवतार का क्या मतलब होता है। अवतार का मतलब उनका, अगर हम किसी को अवतार मानते हैं भगवान का, वो हम तभी मान सकते हैं अगर उनके बारे में वर्णन शास्त्रों में मिलेगा। अगर किसी किसी के जीवन का वर्णन शास्त्रों में नहीं है तो उसे अवतार नहीं कहा जा सकता। अवतार का मतलब ही है कि उसके बारे में शास्त्रों में वर्णन मिलेगा। जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं कि भगवान के अवतार, उनके पिता का नाम, उनकी माता का नाम, उनके जिस जिस जगह पे जन्म लेंगे उनका नाम, सब कुछ वर्णन मिलेगा। जो भी अवतार हैं, जैसे कल की रूप, कल की अवतार आएंगे कलयुग के अंत में, तो कल के अवतार का पूरा वर्णन मिलेगा शास्त्रों में। उनके पिता का नाम, अभी वो कहाँ हैं, उनके पिता कहाँ रहते हैं, उनकी माता कहाँ है, उनकी माता का नाम, जिस गांव में वो जन्म लेंगे वो नाम, सब कुछ आपको शास्त्रों में मिलेगा। वो तो 4 लाख साल बाद आएंगे, लेकिन अभी से वर्णन। उसी प्रकार चैतन्य महाप्रभु के बारे में सब कुछ वर्णन है, कहाँ पे जन्म लेंगे, उनके पिता का नाम, उनके माता का नाम, सब कुछ। तो अवतार का मतलब ही यही होता है। अवतार का मतलब ही यही होता है कि उनके बारे में सारा वर्णन होगा शास्त्रों में। और मुख्यतः उनका नाम, उनके पिता का नाम, उनकी माता का नाम, और उनका, उनके जिस जगह पे वो जन्म लेंगे, वो सारी चीजें शास्त्रों में मिलेंगी। और उस आधार पे ही हम किसी को अवतार मानते हैं भगवान का। ये तो कहने को तो कोई भी कुछ भी बोल सकता है, लेकिन अवतार किसी के मन की उपज नहीं है। वो शास्त्रों में, शास्त्र प्रमाण से हम किसी भी मनुष्य को या किसी भी जीव को अवतार भगवान का मानते हैं। और हम देख रहे हैं कि अवतार वो पूरे सृष्टि के प्रयोजन के हिसाब से भगवान आते हैं। तो कोई भी आ, मन की उपज से अवतार को कोई भी नहीं मानता है। अवतार का मतलब है कि उसे शास्त्र में वर्णन होना चाहिए उनके बारे में। तीसरा श्लोक, यज्ञे च कर्दम गृहे द्विज देव हूत्याम स्त्रीभिः समं नवभिरात्मगतिं स्वमात्रे ऊचे ययात्मशमलं गुणसङ्गपङ्कम् अस्मिन् विधूय कपिलस्य गतिं प्रपेदे। यज्ञे च कर्दमगृहे द्विजदेवहूत्यां स्त्रीभिः समं नवभिरात्मगतिं स्वमात्रे ऊचे ययात्मशमलं गुणसङ्गपङ्कम्।
अस्मिन् विधूय कपिलस्य गतिं प्रपेदे। ट्रांसलेशन, अनुवाद। The Lord then appeared as the Kapila incarnation, being the son of the Prajapati Brahmana Kardam and his wife Devahuti, along with 9 other women sisters. He spoke to his mother about self-realization, by which in that very lifetime she became fully cleansed of the mud of the material modes and thereby achieved liberation, the path of Kapil. अब हम इसका अनुवाद देख लेते हैं हिंदी में। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि भगवान का फिर अवतार हुआ कपिल के रूप में, जिसमें वो प्रजापति ब्राह्मण करदम के पुत्र बने और उनकी पत्नी और उनकी माता देवहूति जो करदम मुनि की पत्नी थी, और साथ ही साथ उनकी 9 बहनें भी थी। उन्होंने अपनी माता को आत्म साक्षात्कार, आत्म तत्व का ज्ञान दिया, जिससे उसी जीवन में वो सारे बुराइयों से मुक्त हो गई और उन्हें मोक्ष मिला और भगवान कपिल का आश्रय मिला। अब आप देखिए, यज्ञे च कर्दम गृहे, तो भगवान ने कहा जन्म लिया? यज्ञे च कर्दम गृहे, कर्दम मुनि के घर में। कर्दम मुनि उनके पिता का नाम है, कपिल मुनि के। तो कपिल मुनि अब वो भगवान के अवतार है, उनका वर्णन है यहाँ पे। तो कर्दम मुनि के पुत्र बन के पैदा हुए थे भगवान, और द्विज देवहूति में एक ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ था और देवहूति माता के गर्भ में पैदा हुए थे। स्त्री भी समम नवमी, तो 9 उनकी बहनें भी थी। आत्मगतिम स्वमात्रे, उन्होंने आत्मगति यानी आत्म तत्व का ज्ञान जो है, ऊंचे ये आत्म शमलम गुण संग पंकम, अपनी माता को आत्मगति का ज्ञान दिया, आत्म तत्व का ज्ञान दिया। अस्मिन विधूय कपिलस्य गतिम प्रपेदे, जिसके कारण कपिल मुनि के चरणों का आश्रय देवहूति माता को मिल गया। अब आप देखिए, तो भगवान इसी के लिए आते हैं। जैसे भगवान कृष्ण ने अर्जुन को भगवत गीता बोली, उसी प्रकार कपिल मुनि देवहूति माता को आत्म तत्व का ज्ञान देंगे। और ये जो आत्म तत्व का ज्ञान है, ये सिर्फ भगवान ही दे सकते हैं, कोई साधारण मनुष्य नहीं दे सकता। तो कपिल मुनि ने वो ज्ञान भगवान को यहाँ पे दिया। कपिल मुनि ने वो ज्ञान यहाँ पे देवहूति माता को दिया। और इस ज्ञान को पाने के बाद, जैसे अर्जुन ने भगवत गीता जब जाना, भगवान से सुना, उसके बाद क्या हुआ, उसे मोक्ष की प्राप्ति हुई। उसी प्रकार यहाँ पे कपिल मुनि का ज्ञान जब देवहूति माता को मिला, उन्होंने जब उन्हें ज्ञान दिया तो उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो गई। तो जो लाभ देवहूति माता और अर्जुन को हुआ, वो सारा लाभ हमें भी हो सकता है अगर हम भगवान के बताए मार्ग पे चलें। तो यहाँ पे इस श्लोक में दो शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आप देखिए अपने स्क्रीन पे, आत्मगतिम, और अंतिम पंक्ति में आ रहा है कपिलस्य गतिम। आत्मगतिम और कपिलस्य गतिम। तो आत्मगतिम का क्या मतलब होता है? आत्मगति का मतलब होता है आत्मा की गति, आत्मा का क्या लक्ष्य है या आत्मा को कहाँ जाना है, जिसे आप मोक्ष भी कहते हैं, उसे आत्मगति। तो कपिल मुनि ने जो ये ज्ञान दिया, ये हम तीसरे स्कंद में भागवत के देखेंगे विस्तार में। इसमें कपिल मुनि बता रहे हैं पूरा जो ज्ञान है उन्होंने अपनी माता को दिया है। और वो ज्ञान आत्मगति, आत्मगति में यहाँ पे शब्द का प्रयोग हो रहा है। तो आत्मगति का मतलब, नहीं तो कई बार क्या लगता है, लोगों को लगता है आत्मा को जान लेना, आत्मा के बारे में जान लेना यही सब कुछ है। नहीं, ये तो ये तो पहली सीढ़ी है। वास्तविक रूप में आत्मगति का मतलब क्या होता है? आत्मा का जो लक्ष्य है, यानी आत्मा का जो गंतव्य है, वहां पे पहुंचाना आत्मा को।
जिसे हम मोक्ष भी कहते हैं। तो मोक्ष का मतलब सिर्फ ये कई लोगों को लगता है मोक्ष का मतलब भगवान में मिल जाना, लीन हो जाना। वो नहीं है, या शरीर से मुक्त हो जाना, वो मोक्ष नहीं है। मोक्ष का मतलब होता है, वास्तविक जो मोक्ष है उसका मतलब होता है भगवान के धाम वापस चले जाना। भगवान, हम उनके अंश हैं तो उनसे वापस से उनके पास चले जाना, उसे मोक्ष कहते हैं। तो वास्तविक मोक्ष। इसीलिए यहाँ पे आप देखिए कपिलस्य गतिम शब्द का प्रयोग किया गया है कि देवहूति माता को जो मोक्ष मिला वो कौन सा मोक्ष था? कपिल मुनि, कपिल मुनि के चरणों का आश्रय मिल गया। तो जैसा हम सब जानते हैं कि आध्यात्मिक जगत जो है, हम सब वहीं से आए हैं और हम वहीं वापस जाना है हमें। तो आध्यात्मिक जगत में वैकुंठ जिसे हम कहते हैं, वहां पे अलग अलग अनगिनत ग्रह हैं जिसे कहते हैं वैकुंठ लोक। और हर लोक में भगवान, जितने भी भगवान के अवतार है उन सब का लोक है वैकुंठ धाम में। कपिल मुनि का एक अपना लोक है, एक धाम है। उसी प्रकार भगवान राम का है, भगवान लक्ष्मण का है, भगवान जितने भी भगवान के अवतार आए हैं उन सब का अपना अपना वहां पे कपिल लोक है, या उनका हम वास्तविक स्थल कह सकते हैं। और जो भक्त भगवान के जिस रूप की सेवा करते हैं, भक्ति करते हैं, वो वहां चले जाते हैं। ठीक है। तो इस श्लोक के अनुसार कपिलस्य गतिम का मतलब देवहूति माता को मोक्ष के बाद जब शरीर से मुक्त हुई तो वो सीधा भगवान कपिल के धाम में पहुंच गई, वैकुंठ लोक में। और उनको ये मोक्ष प्राप्त हो गया। तो भगवान जब अवतार लेते हैं तो अलग अलग अवतार होते हैं, उनके अलग अलग विभाजन भी किया गया है। अर्चावतार, कलावतार, गुणावतार। तो भगवान या तो अवतरित होते हैं या उनके कोई आ, कोई विस्तार वो अवतार लेते हैं। तो या तो भगवान अवतार लेते हैं या उनके विस्तार अवतार लेते हैं। लेकिन भगवान कई बार अपने जो उनके लोक में उनके जो सेवक हैं, उनके दास हैं, या उनके हम कह लें जो पार्षद हैं, कई बार भगवान अपने पार्षद में से किसी भक्त को पृथ्वी पे या अलग अलग ग्रहों पे भेज देते हैं। और वो भी साधारण, उनके भी कर्म अद्भुत ही होते हैं। तो उन्हें शक्ति आवेश अवतार कहा जाता है। मतलब भगवान के जो पार्षद हैं उसमें से कोई अगर आ जाता है इस ब्रह्मांड में, इस भौतिक जगत में, तो उसे कहा जाता है शक्ति आवेश अवतार, क्योंकि उन्हें भगवान की शक्ति मिली है जिसके कारण वो अद्भुत क्रियाएं करते हैं। तो उन्हें शक्ति आवेश अवतार कहते हैं। तो जो भगवान का जो निराकार, कई बार लोग कहते हैं, या भगवान को निर्विकार कहते हैं या निर्गुण कहते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि भगवान में कोई गुण नहीं है, भगवान का कोई आकार नहीं है, नहीं। निराकार का मतलब ये नहीं कह रहे हैं कि आकार नहीं। संस्कृत में जब नि शब्द का प्रयोग हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो है ही नहीं। या निराकार मतलब ऐसा नहीं कि भगवान का आकार नहीं है। या निर्गुण का मतलब ऐसा नहीं कि भगवान में कोई गुण नहीं है, नहीं। निर्गुण का मतलब होता है कि भगवान के अंदर ये तीन गुणों का वास नहीं है। उसी प्रकार निराकार का अर्थ होता है कि भगवान का आकार ये भौतिक जगत में नहीं है। ये भौतिक आकार नहीं है, जैसे हमारे शरीर का आकार हम कहते हैं। तो भगवान का आकार हमारी तरह भौतिक नहीं है, उसका कहने का मतलब ये है। इसीलिए उनको कई बार निराकार कहा जाता है, क्योंकि उनका आकार इस भौतिक जगत जैसा आकार नहीं है। या उन्हें निर्गुण कहा जाता है क्योंकि वो भौतिक जगत के तीन गुणों से परे हैं, इसलिए निर्गुण कहा जाता है। तो भगवान एक व्यक्ति हैं, पुरुष हैं, और हम सब भी पुरुष हैं, हम सब भी व्यक्ति हैं।
तो वो परम पुरुष हैं और हम सब उनके अंश हैं। हम भी पुरुष हैं, वो भी पुरुष हैं। तो हमारा लक्ष्य है जीवन का भगवान के साथ जाके उनके संगति में रहना, उनके साथ रहना, उनकी सेवा करना। और ये सब होता है, ये सब हो पाता है अगर इसको हमें करना है तो इसका एकमात्र जो मार्ग है वो है भक्ति, और उसमें भी सेवा, जो भगवान भगवत गीता में कहते हैं कि अगर हमें भगवान के पास जाना है तो एकमात्र जो मार्ग है उसका वो है सेवा, भक्ति। तो जिस अनुपात में हम भक्ति में आगे बढ़ते हैं, जिस अनुपात में हम भगवान की सेवा में लगते जाते हैं, उस अनुपात में हम भगवान का ज्ञान हमें मिलता जाता है। तो भगवान की सेवा जैसे जैसे हम आगे बढ़ती है वैसे वैसे हमें भगवान के बारे में उनका ज्ञान आते जाता है। और सिर्फ ज्ञान नहीं आता, साथ ही साथ वैराग्य भी प्रकट होता है। वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजितः जनयति आशु वैराग्यम ज्ञानम च यद हेतुकम। तो भगवान का जो अवतार है, भक्ति योग प्रयोग जनयति आशु वैराग्यम ज्ञानम च यद हेतुकम। तो भगवान के बारे में जब हम ज्ञान करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, तो अपने आप ज्ञान भी आ जाता है और अपने आप वैराग्य भी प्रकट होता है। हमारा जो ये जो भागवत का जो विज्ञान है, भागवत विद्या जो है, भगवत विद्या जो है, इसका लक्ष्य डिटैचमेंट नहीं है, इसका लक्ष्य त्याग नहीं है, इसका लक्ष्य है भगवान से प्रेम करना, यानी भगवान से अपनी आसक्ति बनाना। हमें हमारा जो लक्ष्य है वो त्याग करना नहीं है, हमारा लक्ष्य है भगवान को पाना और भगवान से प्रेम करना। जब उनसे हमें प्रेम हो जाएगा तो बाकी सब चीजों का त्याग अपने आप हो जाता है। ये भागवत विधि है। तो इस सब का की जो पहली सीढ़ी है वो है भक्ति या सेवा। सेवा से ही शुरू होती है, और क्योंकि सेवा ही हमारे जीवन का लक्ष्य भी है, यही लक्ष्य है और यही हमें करना भी है। तो जो सेवा है, अभी ठीक है सेवा तो करना है, लेकिन सेवा कैसे पता लगेगा भगवान हमसे क्या सेवा चाहते हैं? तो भगवान की सेवा का एक नियम है, बहुत महत्वपूर्ण है जानना, कि सेवा का नियम है कि वो हमेशा दिया जाता है, हम ले नहीं सकते। मान लीजिए कोई घर पे आता है अतिथि और वो बोले कि मुझे पानी चाहिए और आप उसको दूध दे दें। अब दूध वैसे अधिक उसमें शक्ति है दूध में, और आपने अच्छा सोच के दिया है, लेकिन वो सेवा नहीं है। सेवा का मतलब दिया जाता है, किसके द्वारा? गुरु के द्वारा। भगवान की सेवा हम अपने मन से नहीं कर सकते, भगवान की सेवा हमेशा हमें अपने गुरु से, आचार्यों से, उनके माध्यम से हमें ज्ञान मिलता है, और सेवा हमें भगवान की गुरु देते हैं। ये परंपरा के माध्यम से हम अपनी सेवा करते हैं भगवान के प्रति। हम अपने गुरु की सेवा करते हैं, हमारे गुरु उनके गुरु की सेवा करते हैं, फिर वो उनके गुरु की, इस तरह से हम सेवा करते हैं परंपरा के माध्यम से। तो सेवा कोई मनगढ़ंत चीज नहीं है, अपने मन के ऊपर से कोई सेवा नहीं कर सकता। भगवान की भक्ति, भगवान की सेवा जो है वो हमेशा गुरु के माध्यम से, गुरु की सेवा करके हम भगवान की सेवा करते हैं। और इस तरह से जैसे जैसे हम सेवा में आगे बढ़ते हैं, हम भक्ति में अग्रसर होते जाते हैं और हम शुद्ध भक्त बनते चले जाते हैं, और अंततः हम भगवान के धाम वापस चले जाते हैं। तो आप सब लोग वीडियो को लाइक कर लीजिए, कमेंट कर लीजिए। आज यहीं अपने सत्र को विराम देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।